आज आम फॉलोअप लेसन ग्रासहॉपर पढ़ा। ग्रासहॉपर कौन देछि देयर लिव्ड ए मदर ए फादर एंड देयर डॉटर इन ए टाउन। द डॉटर वाज स्टडीइंग इन क्लास 3। One day they went to their village. The village had no electricity. In the evening, the only light they had was a kerosene lantern. The lantern was placed in the veranda. A lot of insects and some grasshoppers were moving round the lantern. The daughter, pointing to a green grasshopper, asked his father, "What is this, father?" "This is a grasshopper," replied the father. The daughter asked again, "Why is it called a grasshopper?" There lived a mother, a father and their daughter in a town. गोटे सहर रे माँ बापा एवं तांको झील रोते। द डॉटर वाज स्टडीइंग इन क्लास 3। झीलटी तृतीय श्रेणी रे पढ़ुला। वन डे दे वेंट टू देयर विलेज। दिने कौन होइछि तांको गाँ को से माने गले। द विलेज हैड नो इलेक्ट्रिसिटी। आ गाँव कौन है गाँव में एमती भी गोटे गाँव में विद्युत न था। गाँव में विद्युत नाला लाइन नाला इलेक्ट्रिसिटी नाला। इन द इवनिंग द ओनली लाइट दे हेड वाज ए किरोसिन लंठन। तो संध्या समय रे तांकर आलोकर माध्यम कौन ओनली लंठन। द लंठन वाज प्लेस्ड इन द बारांडा। से लंठन को घर बारांडा बा पिंडारे रखाई। ए लॉट ऑफ इंसेक्ट कीट पतंग जीव एंड सम ग्रासहॉपर वेयर मूविंग राउंड द लंठन। कौन है से लंठन चारि पाखरे बहुत गुड़ा इंसेक्ट और ग्रासहॉपर आसिकी घूरी बुलछंती। द डॉटर, पॉइंटिंग टू ए ग्रीन ग्रासहॉपर, आस्क्ड हिज फादर, "व्हाट इज दिस, फादर?" तो से झील कौन कला ना गोटे ग्रासहॉपर को देखे पचारुची बापा को, या कौन? "दिस इज ए ग्रासहॉपर," रिप्लाइड द फादर। बापा कौन उत्तर देले ना यह गोटे ग्रासहॉपर बा झिंटिका। द डॉटर आस्क्ड अगेन, "व्हाई इज इट कॉल्ड ए ग्रासहॉपर?" तो झील पुणी थे पचारा कहीं ग्रासहॉपर कह जाए। टू रे देख, आफ्टर वीक्स स्टे इन द विलेज दे केम बैक टू द टाउन वेयर दे लिव्ड। One day the daughter came running to her mother and said, "Mother, come. There is a househopper." Her mother went inside the room and saw a wounded cockroach jumping up and down on the floor. She said, "This is not a househopper, this is a cockroach. You don't know the difference between grasshopper and the cockroach, girl." But the daughter said, "No, this is grasshopper, mummy. It hops on the house." But the mother insisted, "No, that is a cockroach, not a grasshopper." But the daughter argued, "If one that hops on grass is called grasshopper, so why can't one that hops in the house be called a househopper?" तो गोटे सप्ताह गाँव रे रहिला परे दे केम बैक टू द टाउन वेयर दे लिव। से सहर में जेटी रोते से फेरिले। One day the daughter came running to her mother and said, दिने झील ता माँ पाखक दौड़ी आसिक पचारुची, "मदर, कम, देयर इज ए हाउसहॉपर." माँ घर को आस, घर गोटे हाउसहॉपर अच्छी। मदर वेंट इनसाइड द रूम एंड सॉ ए wounded cockroach jumping up and down on the floor. तो माँ जाकि जो रूम रे देखुन कौन है ना क्षत विक्षत होता गोटे असरपा डिआडोई करुच्ची। तो सी सेड, "दिस इज नॉट ए हाउसहॉपर." से कौन कहते छुआ ये हाउसहॉपर नुहे, दिस इज ए कॉकरोच, यह गोटे असरपा। यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ग्रासहॉपर एंड ए कॉकरोच। तुम गोटे ग्रासहॉपर आ कॉकरोच विषय रे प्रभेद कौन जान न। बट द डॉटर सेड, "नो, दिस इज ए ग्रासहॉपर, मम्मी. इट हॉप्स ऑन हाउस." बट द मदर इंसिस्टेड, "नो, दैट इज ए कॉकरोच, नॉट ए ग्रासहॉपर." किंतु माँ कौन कहते ना माँ ताको जिद करी कहते जे ना सी गोटे कॉकरोच ग्रासहॉपर नुहे। बट द डॉटर आर्ग्यू, किंतु झील कौन जुक्ति करुच्ची, "इफ वन दैट हॉप्स ऑन ग्रास इज कॉल्ड ग्रासहॉपर." जदि जी जड़े घास उपर चले रुहे ताको ग्रासहॉपर कहूचे, झिंटिका कहूचे, "व्हाई कैंट वन दैट हॉप्स इन हाउस बी कॉल्ड ए हाउसहॉपर?" तो जड़े जी घरे घूरी बुलूची ताको हाउसहॉपर कहीहबनी कौन पाई। ओके, देन क्वेश्चन आंसर को पलि आस। सेशन 2, in which class the daughter studying? The daughter was studying in class 3.
What was the name of the insect? से insect नाम कौन थिला? The name of the insect was grasshopper. Is the daughter clever? Yes, the daughter is clever, but she has a creative idea or creative mind. That's why she is a clever. Ivy, did the mother know about the event in the village? गाँव कौन घटी सेटा माँ जानी थिले कि? No, the mother did not know about the event in the village. And session 3 रे देखो कौन गोटे देइछि the stated below what the mother and father talked about their daughter. ताको बापा माँ दी जण ताको झियो विषय कौन कथा होजंती पढ़िया. Do you know what happened this morning? Ritik came running to me from the other room and said, Mother, come. There is a househopper. I went inside and saw a wounded cockroach hopping on the floor. Ritik called this is a househopper because it hops on the house. How foolish Riti is. She calls a cockroach a househopper. The father said, You don't know. Riti is not a foolish but clever. She is not foolish but very clever. She is able to make a new English word. But there is no such English word in English dictionary, said the mother. You are right, but this is how English words are made. This is creativity and our daughter is really very creative, said the father. से बोले आउ गोटे देख स्टोरी देखिए पढ़िया छोट स्टोरीटी ना देयर लिव्ड ए कपल इन ए बांग्लोर बांग्लोर दी जन कपल माने स्वामी स्त्री रोते वन विंटर मॉर्निंग दे वेयर ऑन वॉक दिने शीत सकाळे से माने कौन सकाळ चलारे जाइछंती द रोड वाज अनयूजुअली लॉनली सब दिन भड़ी रास्ता फांका थाए द वेदर वाज बिट विंडी एंड फॉगी आ पाग केमती थिला ना धीर पवन बहुतिला आ किछि कोडी थिला द कपल सो टू बॉयज डूइंग समथिंग ऑन ए क्लोज शटर ऑफ ए शॉप से दंपति दी जन कौन देखिले ना गोटे दुकान रो कबाट रे दी जन पिला कौन करूचंती किछि करूचंती व्हाट आर द टू बॉयज डूइंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग एते सकाळ दी जन पिला कौन करूचंती द एल्डरली वुमेन आस्क्ड हर हस्बैंड तांको से वयस्क स्त्री लोकटी तांको स्वामी को पचारचंती वी आर गोइंग दैट वे लेट्स सी सेड द हस्बैंड हस्बैंड कौन कहले ना आमे भी सही रास्ते जाउछे चलो देखिबा आगो को व्हेन दे केम क्लोज द बॉयज रन अवे इन ए सस्पियस वे जेतेले से माने पाखको पहुंचती दी जण पिला कौन गुटे संदेहजनक भावे दौड़िले सस्पियस माने संदेहजनक कमिंग क्लोज टू द शटर दे सो हैंड वर्क ऑफ द बॉयज तो पाखको आसी कबाट रे कौन देखिले से पिला मानकर हाथ काम देखिले कौन हाथ काम ऑन द शटर इट वाज रिटन टू लेट शटर रे लिखा हितला टू लेट माने भड़ा दिया जीवो प्रोबेबली द ओनर वांटेड टू लेट इट द क्लेवर बॉय हैड इंसर्टेड ए स्मॉल आई इन बिटवीन टू एंड लेट मेकिंग इट टॉयलेट किंतु से चालाक पिला दी जण कोन करचंती टू आउ लेट मझिरे आई बसी दीचन दैट बिग मेकिंग टॉयलेट दैट मीन शौचालय पायखाना तो हाउ इंटेलिजेंट द बॉयज आर एक्सक्लेम्ड द वाइफ तो से स्त्री लोकटी आश्चर्य हो गला हम छुआ माने केते चालाक हेलेनी बट वी फेल देम इन इंग्लिश इन आवर स्कूल सेड द हस्बैंड किंतु हस्बैंड जेटी कोन कहले किंतु आम चूला पिला माने तो इंग्लिश रे बहुत स्मार्ट है किंतु आम एग्जाम रे ताको फेल कर दउजे ओके थैंक यू नेक्स्ट कौन अच्छी नेक्स्ट पढ़ू आम गुड मॉर्निंग लेसन 3 गुड मॉर्निंग थैंक यू।